subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. The next thing in Bharatanatyam, in any classical dance, is a sequential movement. Sequence means we give a sequence of movements, and those sequence of movements are to be followed in that particular sequence. And it can be a sequence of 10 movements, 15 movements, maybe even a 20-25 movements that has to be remembered in a particular order and in a particular rhythm. So that rhythm is, I told you before, I'll come to that, it's a very complicated affair. But when we follow these sequential movements, the parietal lobe of the brain is stimulated. Sequential perception and visual perception and spatial perception. All the three are to do with the parietal lobe, which is actually that part in which, when you remember these things, so many other things like alphabet is also a sequence, the word is also a sequence of letters, sentence is a sequence of words. So the sequential perception is stimulated when we learn movements with the body that follow a particular sequence. For example, takkitta, 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 takkitta. So these four movements I followed in a particular sequence to a particular rhythm of takkitta, takkitta, and 4 takkitta I did 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 4s are 12 plus takkirgirdum, takkirgirdum 4, 12 and 4 is 16, 16 is that 16 beat katalam. So this is a very simple calculation. So when a person does with these sequential movements with a particular rhythm sequence that also adds up to a particular number, it is actually like a feeling of achievement. But we have achieved something, we have achieved. In the similar way, spatial perception. We are with the hands, we are making. Now I did like this, it was a semicircle, then I covered a line, then I covered a space from the diagonally, then this is space, making of circles, making of rectangles, making of oblong, squares, triangles with the body in space. So this is called spatial perception. Then we have visual perception in dance, where we visualize something. So now I am Yashoda, and there is Krishna. Where is Krishna? Where is he? There he is. Krishna, come now, come to me. So I am focusing my eyes at a particular height to show that Krishna. Then I follow him. Oh, come now. No, I have something for you. So all these things, this is visual. So we are trying to, and as you visually visualize something, the audience also visualizes. This is also a very satisfying thing, in which not only satisfying, a challenging thing, in which you with your one body have to create many characters visually just with your eyes. So in that also the parietal lobe is stimulated. And there is another part of the brain, the medulla, in which balance is controlled. So in classical dance, when you hold the foot up, stand on one foot, create many postures in, and even the circling movements, whirling movements, you have to maintain the balance. And such exercises of the classical dance, they stimulate the medulla. So the right hemisphere and the left hemisphere of the brain, they do different things. Like the left hemisphere is to do with all your science, maths and all those things, and the right hemisphere is to do with creativity. So whatever action is there just in reading or remembering things logically, that is the left hemisphere. But the right hemisphere, creativity. When we stimulate the creative part of the brain, what happens is every single thing we start remembering with the creative part of the brain. So that also is stimulated. ये जो मैंने बताया था आपको सीक्वेंशियल के बारे में, स्पेशल के बारे में, विजुअल के बारे में, इन सब के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑलरेडी अमेरिका में कर चुके हैं, एंड जिसको बोलते हैं
इंक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी टू द ब्रेन। मतलब ब्रेन में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, हमारा ब्रेन में जितने सेल्स हैं उसका सोचो 1% भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड जितने हमारे सेल्स जागे होते हैं, जितने हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, उतना हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको IQ बोलते हैं ना। सो ये इंक्रीज़ करने के लिए क्लासिकल डांस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टूल। क्यों? व्हाट इज़ दैट? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो उन्होंने क्या किया था, अमेरिकन रिसर्चर्स ने, कि उनको एक ग्रुप लिया लोगों का और सर्किट ट्रेनिंग करवाया। सर्किट ट्रेनिंग मतलब पहले बोला आप ऐसे करो, 10 बार जंप करो, फिर उसके बाद 8 बार दौड़ो, उसके बाद 4 बार एक जगह में हॉप करो, उसके बाद 3 बार सर्कल ले लो, ऐसा करके सीक्वेंस दिया। फिर उसके बाद ये ख़त्म होगा, फिर उसके बाद शुरू करो। सो ये सर्किट हो गया, एक सर्कुलर सर्किट हो गया। सो उनको तकरीबन 15-20 मूवमेंट्स याद करना था, उसके बाद वापस ऐसे उन्होंने कुछ लोगों का दिया IQ, पहले दोनों का, दूसरा ग्रुप को नहीं दिया। सो दोनों का पहले IQ लिया था एंड बाद में आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग उन्होंने दोबारा IQ टेस्ट किया, इनका काफ़ी बढ़ गया था। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले इनका जो दिमाग का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लेवल है, O2 लेवल, उसको देखा तो वो भी बढ़ गया है। मतलब जो लोग सर्किट ट्रेनिंग करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ब्रेन में जाने, और जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है ज़्यादा तो आपका जो सोया हुआ जो सेल्स हैं वो जाग जाते हैं, इसलिए तो IQ बढ़ा था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ा। और क्लासिकल डांस में क्या होता है, बच्चे को नहीं पता, एक बच्चा जब करता है उसको नहीं पता कि वो एक सर्किट ट्रेनिंग कर रहा है या वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ा रहा है, उसको नहीं पता, वो तो मज़े ले रहे हैं अपना। दे आर जस्ट ताकत जुम तेरी ताम जुम तेरी जगह तेरी तई तक किट तक तक किट तक तक किट, दे आर डूइंग दिस सीक्वेंस। उनको क्या पता कि वो एक सीक्वेंशियल ट्रेनिंग कर रहे हैं या वो एक सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं या उनका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका IQ बढ़ जाता है। और क्लासिकल डांस सीखने वाले बच्चों को IQ बहुत हाई होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.